We thank you so much for, making time again for us here at Vatsalya. And we are eager to hear from you now. Great. Great, thank you. Okay, I'm going to share my screen. Let's see. Okay, can you see that? Yes. But we don't see you full screen. Just how do I make it full screen? Okay, let me see if I can make it full screen. Just a second. Yeah, it's better. It's larger now. I had a tab open. Well, let's see. Okay, hold on. You are full screen now. So I think now it should work again. Yeah, it should work better. Yeah, okay, it's is that better. full screen now? That's okay. Yeah, that's almost full screen. We can. Okay, great. So I will speak a little bit, and then I will let you translate. Okay? Perfect. Okay. So my name is Dr. Henry Throop, and I'm an astronomer at NASA headquarters in Washington, D.C. मेरा नाम हेनरी थ्रूप है और मैं खगोल शास्त्र का वैज्ञानिक हूं नासा हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में जो अमेरिका में. Yes. And I am going to talk today a little bit about NASA and a little bit about looking for life in the universe. आज मैं थोड़ी सी बात करूंगा नासा की और थोड़ा सा जीवन की खोज की, हमारी पृथ्वी के परे जीवन की खोज की. So NASA is the National Aeronautics and Space Administration, and it is the U.S. space agency. NASA, National Aeronautics and Space Administration, ये जो लिखा है ना नाम दिख रहा है, तो ये है इसका पूरा फुल फॉर्म. और ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है. जैसे भारत की कौन सी है? भारत की इसरो है, वैसे अमेरिका की नासा है. Excellent. And NASA is not a company. NASA is a part of the U.S. government, and it is the biggest space agency in the world and the first. तो नासा एक कंपनी नहीं है, मैंने गलत बोला था, कंपनी नहीं है. नासा एक अमेरिका की सरकार का हिस्सा है और ये दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है. ठीक है? नेक्स्ट. So NASA has many projects in the universe, and I bet you've heard of many of these. I'm going to tell you about a few of them. नासा ने बहुत सारे ऐसे अभियान करे हैं जो कि पृथ्वी से बाहर बहुत सारी चीजों की खोज करने में काम आए हैं, लेकिन इनके कुछ अभियानों के बारे में ये आज हम लोगों को बताने वाले हैं. ठीक है? So this here is the Hubble Space Telescope. The Hubble Space Telescope is the first large telescope in space that we ever put up. ये जो फोटो है ये हबल स्पेस टेलीस्कोप की है. ये वाली नहीं, ये स्पेस टेलीस्कोप जैसे अपन यहाँ पे दूरबीन जो छत पे रखे हैं उनसे देखते हैं, इनके दूरबीन अंतरिक्ष में भेजे तो वायुमंडल का जो रोकता है ना देखने का, वो भी नहीं है, बाहर स्पेस में देखते हैं. और ये हबल का स्पेस टेलीस्कोप है और ये पहला ऐसा विशाल टेलीस्कोप जो पृथ्वी से बाहर भेजा था 1993 में. And the Hubble Space Telescope. Sorry. Should Yes. we take questions as it comes or at the later stage? Let's take them at the end. Okay. Final में questions we'll ask. So note this down. Okay, others note this down. ये लिखो, ये पक्का very good question. Ask this later. Okay. Next. So the Hubble Space Telescope has a large mirror. The mirror is 2.5 meters across. And the purpose of the Hubble Space Telescope is it's above all of the clouds and all of the atmosphere and all of the light pollution from Earth. So Hubble Space Telescope का 2.5 मीटर का मिरर है.
अपना जो टेलीस्कोप है उसका सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, उसका 16 इंच का मिरर है ना, देखा है आप लोगों ने? तो इसका 2.5 मीटर का, मतलब कितना बड़ा, 2.5 मीटर, मेरी हाइट से भी बहुत बड़ा, ठीक है। और ये पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर है, जैसे मैंने बताया। तो वायुमंडल का जो बीच में आता है ना, डस्ट पोल्यूशन, उस सब के भी पार, ठीक है। यस। And this here is one of the most famous pictures which Hubble has made. It's in the Eagle Nebula, and it shows stars and planets being born. Excellent. So ये जो तस्वीर है ये ईगल नेबुला की है, और ये बहुत बहुत प्रसिद्ध इमेज है जो हबल ने ली थी। और ये जन्मभूमि है सितारों की, जहां सितारों तक का जन्म होता है। जैसे अपना सूरज एक सितारा है ना, तो सितारों का जन्म होता है नेबुला में। काफियों को तो पता है अब ये बात, है ना, हमने भी इसकी तस्वीर ली है, पता है। ओके, या नेक्स्ट। The Hubble Space Telescope is great, but we have a follow-up space telescope called the JWST, the James Webb Space Telescope, which was launched 3 years ago in 2021. हबल स्पेस टेलीस्कोप तो बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन अभी 3 साल पहले ये वाला टेलीस्कोप जो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, क्लास में आपको बताया था कुछ कुछ में, ये 2021 में लॉन्च हुआ। नेक्स्ट। And James Webb Space Telescope is even larger. It's about 8 meters across, and it looks at the sky in the infrared. So it looks at the heat coming from stars and planets and galaxies. Excellent. तो जैसे हबल का जो टेलीस्कोप है वो 8 मीटर का है। याद है अपन ने बात करी थी कि हमारी आंख, ह्यूमन आई, वो 2-3 mm खुलती है, और जितना ज्यादा अपर्चर जितना ज्यादा खुलेगा उतना ज्यादा दिखेगा, उतनी ज्यादा लाइट। तो ये 8 मीटर का है, 8 मीटर्स, यानी कि साइंस सेंटर के उधर से इधर तक, ठीक है। और ये केवल हमें जो दिखता है विजिबल लाइट, वो नहीं, इंफ्रारेड यानी कि गर्म कितनी है चीजें, वो देख सकता है। नेक्स्ट। And you can see on the bottom here, below the mirror is in the center in gold. Below the mirror are what looks like a umbrella. And the umbrella, just like you use an umbrella outside to keep yourself cool in the shade, the umbrellas keep James Webb Space Telescope cool when it's in space as well. ओके, या तो बच्चों ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये जहां मेरा माउस है, ये तो देखो शीशे हैं, ये येलो वाले तो शीशे हैं, लेकिन ये जो है ये इसकी शील्ड है, मतलब ये इसको बचाती है। और ये कैसे, ये जैसे हम अम्ब्रेला से, अभी बारिश का मौसम है, मानसून है, तो बारिश से बचते हैं ना अपन, तो छाता यूज करते हैं, अम्ब्रेला। और वैसे ही यहां पे गर्मी से बचाने के लिए ये इसका छाता है जो इसके पीछे। नेक्स्ट। So here is one of the Mars rovers. NASA has 5 Mars rovers on Mars. And we started with small rovers, and then we make bigger and bigger Mars rovers and on the surface of Mars. ये जो सतह है ये मंगल ग्रह की सतह है, दिख रही है आपको, भूरी लाल जैसी, है ना। ये मार्स के रोवर है। रोवर मतलब जैसे आप लोगों को पता है ना, अभी पृथ्वी में ड्रोन उड़ते हैं, वैसे ही जमीन पे भी ड्रोन चलते हैं। ये रोवर है, एक तरीके से आप यूं मान लो छोटा सा ट्रैक्टर, जो वहां के सतह को उसका अभियान, उसका स्टडी करने के लिए, उस पर शोध करने के लिए काम में आता है। और हम धीरे धीरे करके बड़े बड़े और रोवर भेजते गए। नासा ने बहुत सारे रोवर मार्स में भेजे, 5 रोवर भेजे अभी तक। नेक्स्ट। The Mars rovers don't have any people on them, but instead they're robots. And so they're driven by people on Earth to go explore Mars like a robot. तो मार्स का जो रोवर है ना, उसमें लोग नहीं है, कि उतना बड़ा नहीं है कि लोग भी आ पाए, और अगर है भी तो भी लोग नहीं है, ये रोबोट ही है। कंट्रोल कौन करता है इनको, कहां से करते हैं? पृथ्वी से। पृथ्वी से सारा कंट्रोल करते हैं, समझे। तो पृथ्वी से कंट्रोल आराम से कर लेते हैं, लेकिन इसमें
लोग नहीं है, अनमैन्ड है, क्या बोल, राइट, ग्रेट. Here's another spacecraft we have. I talked about this one last time. And this is the New Horizons mission to Pluto. And it launched in 2015 and was the first mission to explore Pluto up close. ये इस बारे में हेनरी सर ने पिछली बार अच्छे से बात करी थी, पूरा हमें जर्नी बताई थी, याद है? कौन सा साल था बताओ, कौन सा साल था? 2015. वेरी गुड. सो तब वहां इसने फोटो ली थी और इसमें हेनरी थ्रूप सर खुद भी इन्वॉल्व थे काफी. कौन से साल में ये भेजा था? 2000. Oh, they even remember the launch year. It was 2006. 2006, that's right. Perfect. Nice. Yes, next. And so just like the Mars rovers, there's no humans on this. This is a robotic spacecraft, which is controlled by humans on Earth, but there's no people on the spacecraft. तो जैसे कि मार्स रोवर पे कोई लोग नहीं थे, अपन ने सीखा ना अनमैन्ड, ये भी अनमैन्ड है, इस पे भी कोई इंसान नहीं है, ठीक है? और अपन यहीं से कहां से कंट्रोल कर रहे हैं? पृथ्वी से. ग्रेट. नेक्स्ट. We also have the Parker Solar Probe. This is the closest mission which has ever been to the sun. So it doesn't land on the sun, but it gets very, very close to the sun to explore its physics and the inside of the sun. तो ये जो है ये पार्कर सोलर प्रोब है. दिस वाज आई थिंक लास्ट ईयर, राइट? 2 years ago. Couple years ago. तो ये सूरज की स्टडी के लिए भेजा था और ये सूरज के ऊपर नहीं लैंड होता, ठीक है? सूरज के ऊपर लैंड होगा तो क्या होगा? वेरी गुड. सो सूरज के ऊपर नहीं लैंड होता, लेकिन उसके पास जाता है उसका ज्यादा से ज्यादा विश्लेषण करने के लिए. जैसे अपन शेर के पास जाएं तो उससे पास जाके ऐसे प्यार नहीं करेंगे जैसे सुल्तान को करते हैं, लेकिन कैमरे से पास से देखेंगे कैसा है वो, है ना? नेक्स्ट. Many of these missions, like Parker Solar Probe, are so big that they can't be done by just one country. So Parker Solar Probe was built with both NASA and ESA, the European Space Agency. तो ये ऐसे मिशन है जिसमें केवल एक इंसान या एक देश नहीं कर सकता इसको, केवल एक देश भी नहीं कर सकता, उनको साथ में एक समीकरण सा बनाना पड़ता है और लोगों से और देशों से. तो नासा और यूरोप की जो स्पेस एजेंसी है, यूरोप जहां पे इंग्लैंड है, जर्मनी है, ये सारे देश है ना, उसकी जो स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा प्लस ईएसए, ये लिखा है ना, उनके सहयोग से साथ में ऐसे मिशन होते हैं. और भविष्य में वात्सल्य साइंस सेंटर, वात्सल्य स्पेस ऑब्जर्वेटरी के भी सहयोग से होगा कि नहीं? ओके, या दैट वाज अ लिटिल जोक एट द एंड, इफ यू अंडरस्टूड दैट. Yeah. I didn't, but NASA has also collaborated many times with ISRO, the Indian Space Research Organization, because ISRO is one of the leading space research groups in the world, and there's so many projects that NASA and ISRO have done together. Wow. So क्या बोल रहे हैं वो? नासा और इसरो ने हाथ में हाथ मिला के बहुत सारे काम करे. तो हम जो बाद में मजाक में बोल रहा था वो वाकई में हो सकता है. Actually, I just joked that they may collaborate with Vatsalya Space Observatory, but you just talked about that, in the reference of ISRO. So I'm just saying it is possible. ये possible है. आप में से कोई वैज्ञानिक बने, one of you may become a scientist like this and contribute future. So you may have a handholding. आप लोग, sorry, speaking in English again. आप लोग नासा के साथ सहयोग में हो सकता है कोई नया प्रोजेक्ट करो, सौर मंडल से बाहर कोई स्पेसक्राफ्ट भेजो. संभव है? Good. Next. NASA started just before the Apollo project, which was to send humans to the moon in 1969. And NASA now is working on sending humans back to the moon in 2026 or 2027. Wow. तो 1958 में तो नासा बना. 1969 में नासा की टीम अपोलो के मिशन में
2-3 बार चांद पे लैंड करा, वहां चले लोग, ठीक है। और अभी 2026 में, 26 और 27 में वापस से नासा चांद के सतह पे लोगों को भेज रहा है। समझ में आया? कौन जाना चाहता है वापस? ओके, लास्ट में पूछना अगर कोई सवाल हो। ओके, नेक्स्ट। So here we have the 4 astronauts, which are going to go back to the moon with the Artemis moon landings. Nice. And this is going to be the first woman to walk on the moon and the first person of color to walk on the moon. ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, देखो सुनो, ये जो टीम दिख रही है आपको, लोगों के चेहरे दिख रहे हैं, देखो, अब एक दुनिया 1969 में एक अलग तरीके से थी, अब पूरी दुनिया एक परिवार की तरह देखी जाने लगी है। तो चाहे आदमी हो या औरत, या चाहे गोरा हो या काला, फर्क नहीं पड़ता, आप अगर अपनी गुणवत्ता करते हो तो आप वहां पे पहुंच सकते हो। तो पहली बार कोई विदेश से आए हुए, अफ्रीका के आए हुए या फिर भारत से आए हुए लोग, पर्सन ऑफ कलर से ये मतलब है जो अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं वो जा सकते हैं, और पहली एक औरत है जो जाएगी। ओके, सो या, एक्सीलेंट पॉइंट कवर्ड हियर। And Sunita Williams is, of course, one of the most famous NASA astronauts. And she is from India, but a citizen of the US also. She is up on the space station right now. And I met her one time when she was in Delhi. हाँ, तो सुनीता विलियम्स नाम सुना है? सुनीता विलियम भारत की बनी पड़ी, मतलब भारतीय हैं, वहां पे अब अमेरिकन हो गई हैं, लेकिन वो अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो अपन देखते हैं ना, कई बार एक सैटेलाइट जारी होती है, वो उस पे हैं अभी, और उनका वापस आने का था, अभी थोड़ी फंसी हुई है वहां पे, आ जाएंगे वापस थोड़े नेक्स्ट मिशन में, लेकिन सो दे नो दैट शी स्टक देयर इन अ वे, शी विल कम बैक इन द नेक्स्ट मिशन, सो वो आ जाएंगी। पर वो वन ऑफ द, उनसे वो मिले थे दिल्ली में, हेनरी थ्रूप सर मिले थे सुनीता विलियम्स से दिल्ली में। ओके, ग्रेट। Okay. There are hundreds of more NASA projects exploring the Earth, the Moon, the Sun, Mars, the other planets, and everywhere in the universe. And you can read about all of them on the NASA webpage, nasa.gov. तो देखो, दिस इज अ वेरी गुड थिंग फॉर टीचर्स। आप लोग समझो, जो नासा की वेबसाइट है उसको बच्चों को दिखाओ, nasa.gov, और वहां सारी जानकारी भरपूर तरीके से है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, पृथ्वी के बाहर के पूरे बड़े बड़े नक्शे बना रखे हैं। हम भी अपने कोर्स में ये इस्तेमाल करते हैं कभी कभार, याद है स्पेस इंजन अपन ने गए थे इधर उधर, जो मैप देखा था इधर उधर, तो वो नासा ने बहुत बड़ा डेटाबेस बना रखा है। तो नासा की वेबसाइट बच्चों को जरूर दिखाना, सर बोल। नेक्स्ट। One of the things about NASA is that the projects that NASA does are so big that they require many countries to participate. So NASA collaborates with India and with Australia and with Canada and with Brazil and so many different other countries. And these international collaborations with ISRO and other agencies are so important. वाओ, देखो, नासा कोई भी काम करती है और स्पेशली बड़े स्केल का, उसको बहुत सारे देशों की मदद चाहिए, केवल एक नहीं। ये देखो, जैसे कि कैन आई जस्ट गिव देम द एग्जांपल ऑफ आर्टेमिस अकॉर्ड्स ऑन द स्क्रीन, या, तो ये जो आर्टेमिस अकॉर्ड्स हैं जो अभी चांद पे वापस से ले जाने की बात चल रही है ना, तो ये देखो, ये जो नक्शे पे बने सारी जो कंट्रीज लिखी हैं, जो हाईलाइटेड है यहाँ पे, जो लाल रंग की है, ये सारे देश इस प्रोजेक्ट में भाग लेंगे, सबसे इनको मदद से, सब जगह ये बहुत सारे लोगों को नौकरियां देते हैं, काम देते हैं और मदद देते हैं, समझ रहे हो, एजेंसी के जरिए। ग्रेट। And everything that NASA does, all of NASA's images and data, anybody on Earth can download. So each of you students can go to NASA's website and download all of the images taken by Hubble or taken by JWST or taken by the Mars rovers, and you can study them and learn about them and do science yourself with all these data. So NASA gives away everything it does to everybody on Earth.
तो नासा का जो भी डेटा है, जो भी ये सीखते हैं, जो भी ये विश्लेषण करते हैं, वो सारा डेटा, वो सारी जानकारी ये प्रदान करते हैं मुफ्त में सब लोग। अब वो इच्छा होनी चाहिए अंदर से कि जाके सीखे, पैसे भी नहीं लगते। ठीक है, हम यहाँ भाई पैसे देके बड़े बड़े कोर्सेज कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी की डिग्री ले लेते हैं। नासा वो आप सबको दे रही है जानकर, पूरे दुनिया में सब। नेक्स्ट। So I am not an astronaut. I'm an astronomer. And what I do is I use telescopes and spacecraft to study the solar system. I do a lot with computers. I analyze data. I write papers, and I talk with my colleagues. तो ये जो बोल रहे हैं कि ये एक एस्ट्रोनॉट नहीं है। एस्ट्रोनॉट और एस्ट्रोनॉमर में क्या फर्क है पता है? बताओ बताओ बताओ। एक तो खुद जाता है चांद पे, खुद जो है वो एस्ट्रोनॉट है। एस्ट्रोनॉमर तो हम सब हो सकते हैं, है ना? जैसे एस्ट्रोनॉट भी आप सब हो सकते हो, लेकिन एस्ट्रोनॉट मतलब जो दूरबीनों से और स्पेस के दूरबीनों से उनको उनका जो भी जानकारी देते हैं वो स्टडी करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उसका अच्छे से अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये एस्ट्रोनॉमर है। हेनरी थ्रूप सर क्या है? एग्जैक्टली, नाइस, यस। What I did to become an astronomer is I went to secondary school in the US. I liked math. I liked science. So I took a lot of classes with math and science. And then I went to university for 4 years in the US. And then I did an MSc and a PhD for postgraduate studies. तो ये बने कैसे एक एस्ट्रोनॉमर? देखो, पढ़ाई तो चाहिए देखो इसके लिए, तो बहुत सारी गणित और विज्ञान, ठीक है, और ऐसे नहीं कि रट के समझ के। ठीक है, फिर बीएससी करी फिजिक्स में, किसमें? भौतिकी में। फिजिक्स में बीएससी करी, फिर एमएससी करी एस्ट्रोनॉमी में, फिर और बारीक से बारीक होते गए, और फिर पीएचडी करी एस्ट्रोनॉमी। तो पहले सेकेंडरी मतलब स्कूल, ठीक है, फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज 4 साल बीएससी करी, 2 साल एमएससी करी, 3 साल पीएचडी करी। ठीक है, और उसके बाद एक और चीज, बीएससी करने के बाद एमएससी और पीएचडी करते टाइम ऐसा नहीं कि उनको अपना खर्चा देना पड़ा, उनको खर्चा मिला बल्कि कॉलेज से। तो ऐसा नहीं कि आपको इतनी पढ़ाई के इतने पैसे जुटाने पड़ेंगे, नहीं, आपकी इच्छा शक्ति है तो पैसे तो आ जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे और देशों के बच्चे भी यूएस में पढ़ने आते हैं, आप भी उनमें से एक हो सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, यस। So there are many chances for students at the top of their class to go abroad for postgraduate studies. So if you are interested, you should do well in your studies in university and then apply for postgraduate programs in the US or Europe or other countries to continue your studies abroad. Yeah. So this means इन्होंने बोला कि अगर आप अपनी क्लास में थोड़ा ध्यान देते हो, वही जो मैंने एक बात बोली थी, रोज 1 घंटा पढ़ाई करते हो, थोड़ा सा आप कुछ स्टार सिस्टम है ना अपने वात्सल्य में, आप शुरू हो गया, बताया क्या बच्चों को? पूरा बताया नहीं होगा तो बता देना। स्टार जो बनेंगे ना, उनकी संभावना आगे के बड़े मुकामों में पहुंचने की ज्यादा होती है। ऐसा नहीं कि जो नहीं बनता वो नहीं बन सकता, कोई भी कुछ भी कर सकता है, पर फिर भी आप लोग अगर थोड़ी सी ईमानदारी से अच्छे से पढ़ाई करोगे और समझोगे, अपना दिमाग चलाओगे, तो यहां तक पहुंचना ज्यादा आसान। ठीक है, या नेक्स्ट। Okay. Now I'm going to talk about looking for life in the universe. And I want to ask you, you can tell me how many people think that aliens exist? How many people think there's life in the universe? And you can raise your hand and you can tell me how many people are raising their hand. ओके, तो कितने लोग सोचते हैं कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं? मतलब कितने लोग सोचते हैं कि एलियंस होते हैं? गिव मी अ सेकंड। जो सोचते हैं कि ब्रह्मांड में बहुत सारे मतलब और भी कई ग्रहों पे जीवन, हाथ खड़े करो जिनको लगता है कि है, हाथ खड़े करो।
So we have about 75% hands up that there is a right. All right, all right. Well, my hand is up too. So I think here's why I think that there's life in the universe. If you count all of the stars in the Milky Way, there's about 100 billion stars in the Milky Way galaxy. There's about 100 billion galaxies in the universe. Okay. Each planet has about 10 stars. Okay. And you put those together, and it's 10 to the 23 planets. Okay. So yes, I think at least one planet, and probably more, has life. Okay. तो देखो ये क्या बोला इन्होंने, जीरो दिख रहा है इसमें, जीरो दिख रहा है, याद है मैंने आप लोगों को बताया था, सर भी सोचते हैं कि जीवन है, और वो इसलिए ऐसे सोचते हैं क्योंकि हमारी आकाशगंगा में, आकाशगंगा हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, हमारी आकाशगंगा में 100 बिलियन का मतलब है भाई भारत में 140 करोड़ लोग हैं, 1.4 बिलियन, ठीक है, इन पॉपुलेशन इंडिया, तो वैसे ही 100 बिलियन कितना हो गया, 1 लाख करोड़, 140 नहीं, 1400 नहीं, 10 मतलब 14,000 उतना हो गया ना, हाँ 10,000 करोड़ स्टार हमारी आकाशगंगा में, 10,000 करोड़ गैलेक्सी ब्रह्मांड में, एक गैलेक्सी में इतने तारे हैं, तो और हर सितारे के आसपास 10 ग्रह हैं, जैसे अपना एक ग्रह है, तो यानी कि इतने ग्रह हैं, जीरो गिन सकते हो इसमें, फटाक से गिनो, बोलो 1 2 3 4 जल्दी से, जल्दी जल्दी. So okay, one of them has counted. It's 23 zeros. I think, I don't know whether he's 23 right or zeros. not. Exactly. Yeah, but 23 zeros. तो इतने जीरो हैं. So oh yeah, there's the power also. So इतने जीरो, तो इतने प्लेनेट है, तो एलियन के होने की संभावना है. Exactly. Great. Nice. But have we ever found aliens? No, we've never found any aliens anywhere beyond Earth. No life outside Earth. No life on Mars, no bacteria on asteroids, no radio signals confirmed, nothing. सवाल रखना, मेरे भी बहुत सारे सवाल. हाँ, सो बेसिकली हमें कहीं पे भी जीवन का कोई चिन्ह ही नहीं मिला. हमने ढूंढा आसपास, तो मंगल पे भी नहीं मिला, कोई छोटा से छोटा सूक्ष्म जानवर बैक्टीरिया जैसा वो भी नहीं मिला, एस्ट्रॉइड पे कुछ नहीं मिला, कोई रेडियो सिग्नल, भाई कोई हम जैसे फोन पे बात करते हैं ना मोबाइल पे, कोई रेडियो सिग्नल बाहर से कोई बात करना चाहता हो, कुछ भी आवाज हो, कुछ भी नहीं मिला अभी तक, तो कुछ भी नहीं मिला है ना. लेकिन पानी मिला है हमें, हो सकता है, सवाल है आप लोगों के लिए. या नेक्स्ट. So the biggest question we have in all of astronomy is, are we alone? And that you can break it down. Is the solar system unique? Probably not. Is Earth unique? Probably not. There's many Earths. And is life on Earth unique? We don't know. That's the biggest question, is life unique? Are we alone in the universe? अब देखो क्या बोला इन्होंने कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? नहीं. पर क्या हमारा सौर मंडल एकदम अद्भुत है? क्या ऐसा कोई सौर मंडल है ही नहीं? नहीं, बहुत सारे हैं. क्या हमारी पृथ्वी एकदम अनोखी है? संभावना है कि ऐसे भी बहुत सारे ग्रह हैं पृथ्वी जैसे. तो फिर क्या जीवन जो पृथ्वी पे है वो अद्भुत है, एकदम अकेला है? हमें नहीं पता. या नेक्स्ट. Okay. I'm going to skip ahead here. Sure. So if we want to look for life, the best way to look for life, we think, is to look for liquid water. Because we think that all life that we know of
needs liquid water. So if we want to find life in the universe, we should look for liquid water. तो इनका बात यह है कि अगर हमें जीवन को ढूंढना है तो हमें तरल रूप में पानी ढूंढना है। पृथ्वी पे भी जीवन ऐसे ही शुरू हुआ था, याद है आप लोगों को? कितने सालों तक बारिश हुई थी? हजारों, लाखों तो नहीं, सैकड़ों सालों तक। वेरी गुड। तो वैसे ही पानी अगर हमें चिन्ह मिल रहा है तरल फॉर्म में, तरल यानी कि लिक्विड फॉर्म में, तो फिर शायद वहां हो। नेक्स्ट। And there are 3 missions that NASA has that are looking for life in the universe. And here they are. Number 1 is the Mars Perseverance rover. Number 2 is the Europa Clipper. And number 3 is the Dragonfly mission to Titan. And I'm going to talk about all of these. Okay. तो ये 3 जगहों पे जीवन का बहुत अच्छे से ढूंढ रहे हैं। 3 मिशन है, 3 अभियान ऐसे हैं जिसमें ये जीवन ही ढूंढ रहे हैं। कोई चिन्ह मिल जाए कि जीवन था यहाँ पे, या हो सकता है, या होगा, या है, कुछ भी। तो एक तो मार्स परसिवरेंस रोवर है जो मंगल में देख रहा है। एक यूरोपा क्लिपर है, यूरोपा बृहस्पति का एक मून है, ठीक है। और एक ड्रैगन फ्लाई टू टाइटन है जो शनि का एक मून है, ठीक है। या नेक्स्ट। So here's the first one, is Mars. Mars used to be wet. It used to have rivers going all over the place. But we've never found life on Mars, and we want to. तो ये देखो, इसमें जो तस्वीरें दिख रहे हैं, ये मार्स में हमें पता लगता है, ये जो जैसे आपको ये दिख रहा है, ये जो नसों जैसा आकार दिख रहा है थोड़ा सा, ये बताता है कि कभी एक जमाने में यहाँ पे पानी बहा करता था, जो अब नहीं है, ठीक है। अब एकदम सूखा है, तो वो इवेपोरेट हो गए। पर क्या पहले था? क्या कहीं हमें कोई चिन्ह मिल जाए कि पुराना जीवन का कोई भी एविडेंस, कोई भी सबूत मिल जाए? यस, नेक्स्ट। And Mars doesn't have any big life on it now, like plants and animals. But maybe it used to have bacteria, and maybe we can find, even if we can find the fossils of that bacteria from the past, that would be very interesting. तो अगर हम मान लो हमें कोई अवशेष भी मिल जाए छोटे मोटे, जो ये जिसका विश्लेषण करके हम पता लगा सके कि भाई ये यहाँ पे जीवन था, तो भी बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी खोज होगी। नेक्स्ट। And that's what the Mars rovers are doing. They're looking for rocks that might have clues to Mars's history and past life. तो फिर अभी ये जो रोवर दिख रहा है ना आपको, ये जो रोबोट बताया, ये वही खोज कर रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ भी मिल जाए, कोई छोटा से छोटा सबूत मिल जाए। आज जैसे कि अगर सेफ्टी पिन खो गई है आपकी बड़े से खेत में, ढूंढोगे कितना, वैसा ही चांस चल रहा है इसका, ठीक है। नीडल इन अ haystack analogy I just used. Yeah. Next. So every day, the Mars rovers drive around the surface with their chemistry lab looking for rocks and looking for clues. हर रोज यहाँ पे ये जो भी डेटा भेजता है, वो यहाँ पे 900 केजी, ओके, 900 केजी का जो रोवर है, it's almost a ton in weight. Yes, it is. It's huge. ओके, जो बहुत बड़ा है, और उसमें इतने सारे, देखो कितने सारे उपकरण लगे हुए हैं। ये उपकरण आके ढूंढ रहे हैं कि कहीं पे भी कोई चिन्ह मिल जाए, और केमिस्ट्री लैब है उसके अंदर की एनालाइज करता रहता है। जैसे कि अपन माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ कुछ देख सकते हैं ना, वो भी देखता रहता है कि कुछ है कि नहीं, कुछ है कि नहीं। नेक्स्ट। Let's see. Okay, that's Mars. The next place we want to look is Jupiter's moon, Europa. So Jupiter has 4 big moons named Callisto, Ganymede, Europa, and Io, and you can see them easily in a telescope. यस। तो सबने जुपिटर के चांद देखे ना चारों?
Yeah, so the ones who have seen through the telescope, not the new ones, they all remember all of them. And तो इसमें से हम यूरोपा की बात करेंगे अब, जो हमारा सेकंड वाला है, जहां पे हम ढूंढ रहे हैं जीवन. नेक्स्ट. And Europa looks a little bit like the North Pole of Earth. It has ice on the surface, and below the ice, it has an ocean. अच्छा, सो यूरोपा जो है ना ग्रह, उसके सतह पे बर्फ ही बर्फ है, लेकिन सतह के नीचे समुद्र है. और सतह दूसरी जो, what did you say below this ice was? Below the ice, there is an ocean. ओशन, या उसके नीचे समुद्र है, उसके नीचे समुद्र है, बर्फ के नीचे. जैसे पृथ्वी का नॉर्थ पोल है ना, एकदम ठंडा ठंडा, वैसा ही. नेक्स्ट. And inside that ocean, we think there might be life because it's been warm and wet for billions of years. And that's where life came from on Earth, is a warm, wet ocean. So maybe there's life on Europa in the ocean. तो अब देखो, सतह में तो बर्फ जैसा है, लेकिन उसके नीचे समुद्र है, और जो सैकड़ों साल से वहां पे लिक्विड पानी है, तो वहां जीवन की संभावना ज्यादा है. अपना भी जीवन पृथ्वी पे भी ऐसे ही प्रारंभ हुआ था. नेक्स्ट. This is NASA's Europa Clipper spacecraft. It will launch in October 2024 in 3 months, and then it will orbit Jupiter for 4 years. And it will study Europa and look for life and look to explore its ocean. तो अभी अक्टूबर में ये लॉन्च करेंगे. ये वाला जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट जैसा आपको जो दिख रहा है ना, ये स्पेसक्राफ्ट होगा. This is just an artist rendition, right? This one. Yes, those are photos on the left, and on the right is a illustration. Okay. तो जो बाईं तरफ दिख रहा है, ये तो असली का जो बना दिया इन्होंने अभी तक. और ये तो इमेजिनेशन, जैसे आर्टिस्ट होते हैं ना इलस्ट्रेट करने के लिए, वो भेजा है. तो ये भेजेंगे अक्टूबर में, और 4 साल ये जुपिटर के चक्कर लगाएगा ये ढूंढने के लिए. अगर जीवन मिल गया हमें जुपिटर पे, तो कौन जाएगा? ओके, या नेक्स्ट. if we find life, they'll go. So cool. Here's the third place we want to look for life. The third place is on Saturn's moon named Titan. And you can see Saturn and Titan in the telescope easily as well. तो सैटर्न का भी एक चांद है, टाइटन. अपन ने सैटर्न तो देखा है, उसके पास में एक छोटा सा बिंदु की तरह टाइटन भी दिखता है. तो ये उसका एक चांद है जहां पे तीसरा अभियान चल रहा है इनका जीवन खोजने का. नेक्स्ट. On Titan, the surface looks a little bit like the Earth. It has lakes, dunes, mountains, valleys, rainstorms, complex chemistry, and a thick atmosphere. But it's super, super cold. ओके. तो ये जो दिख रही है आपको तस्वीरें, ये सैटर्न के चांद टाइटन की सतह की है. और ये अपनी पृथ्वी जैसे ही दिखता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन जो आपको वायुमंडल पीला सा दिख रहा है, और ये सतह, ये बहुत ठंडा है. पानी है लेकिन जमा हुआ है. व्हाट इज द टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली? Approximately negative 300 degrees. That's Fahrenheit. So yeah, so negative 200 Celsius. -200 सेल्सियस, -200 सेल्सियस तापमान है. तो पानी तो एकदम जमा हुआ है, लेकिन इथेन और मीथेन की नदियां बहती हैं, जो यहाँ पे गैस होती है, जिससे बायोगैस से अपन खाना बनाते हैं ना, मीथेन, वो वहां पे पानी की तरह बहती है. या नेक्स्ट. So NASA is sending a spacecraft called Dragonfly. And Dragonfly is a drone. It's an octocopter, and it will take a rocket to Titan and then use a parachute and propellers to land on the surface of Titan and then explore it. देखो, ये जो दिख रहा है आपको हेलीकॉप्टर जैसा, ये ऑक्टोकॉप्टर है. ओके, ऑक्टोकॉप्टर मतलब maybe it had eight propellers, right? That's right. Like a drone. Like a drone. जैसे ड्रोन में 4 होते हैं ना पंखुड़ियां, इसकी 8 पंखुड़ियां होंगी,
और ये 2028 में ड्रैगन फ्लाई वहां उसकी सतह पे लैंड करेगी, और हो सकता है हमें बहुत सारी चीजें जान के मिल जाए उसको। ओके, अब आपके लिए एक सवाल है कि इतने ठंडे सतह पे ये कैसे जिंदा रहेगा? सवाल पूछना अभी। या नेक्स्ट। And because Titan has liquids and has an atmosphere, we think that it might have life or organic chemistry, maybe like the Earth. We don't know, but we're going to be looking for it. तो हो सकता है, क्योंकि वहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब देखो हो गया, एक तो हम बोलते हैं कि कहीं पे आयरन मिल गया, निकल मिल गया, ये मेटल मिल गया, ये सारी चीजें मिल गई, ये तो नॉर्मल सिंपल एलिमेंट मिल गए है ना। लेकिन ऑर्गेनिक के मतलब है कि जैसे मैंने अभी बायोगैस बोला, तो उससे अपन खाना बनाते हैं, तो मीथेन और इथेन यहाँ लिखा है ना, तो वैसे से कार्बन होता है उसमें एक, पता है ना आपको, कार्बन का अणु होता है। तो जहां कार्बन का अणु हो गया है वहां ऑर्गेनिक हो जाते हैं, तो वहां जीवन की संभावना ज्यादा होती है, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, तो वो देखेंगे हम। नेक्स्ट। These are the three best places to look for life in our solar system. There's many other stars in the galaxy and the universe, but they're so far away, even with our fastest rocket, it would take us almost 1 lakh years to get to the closest star, Proxima Centauri. Did you just say 1 lakh years? Yes. That was good. You use lakh. Okay. Nice. Okay. It's written 50,000, but you said a lakh. So You're like half lakh years. Half lakh years. Okay. Yeah. All right. So हमारे सौर मंडल में तो हम देख सकते हैं जीवन का आसपास है, लेकिन सबसे करीबी सितारा, याद है मैंने पिछली बार आप लोगों को बताया था कि कितना दूर है? तो सबसे करीबी सितारा में भी अगर हम यान भेजें आज की तकनीक से, तो उसको 50,000 साल लगेंगे, लाख साल का आधा समय लगेगा वहां पहुंचने में। ठीक है, तो हम कैसे वहां पे जीवन का, अपने जीवन काल में खोजबीन कर सके कि वहां जीवन है कि नहीं, तो इसलिए हम यहीं पे कर रहे हैं। नेक्स्ट। So for these stars, we can't visit them. We have to just use a telescope. तो इन लोगों के लिए तो हमें बस, हमें टेलीस्कोप का उपयोग करके अनुमान ही लगाने कि भाई क्या हो सकता है या नहीं हो सकता। नेक्स्ट। यस। And there are some places on Earth that we can study to look for life too. For instance, in Maharashtra, near Aurangabad, there is the Lonar crater, which is very similar to some of the craters on Mars. Okay. So, can you also elaborate on the second line in this? I'll just translate it at one go. Perhaps the best site on Earth to study conditions on ancient. Yes. So with this crater, this impact crater was made by an asteroid that hit Earth about 5 lakh years ago. And when it did, it made an impact crater like those on Mars. It's the same kind of rock and the same physics and has water in it. So by studying this impact crater on Earth, we can study how life might have formed on Mars. Okay. तो देखो ये लोनार क्रेटर जो है, ये भारत में ही, महाराष्ट्र में, पर अहमदाबाद से ज्यादा दूर नहीं, एक क्रेटर है जो 5 लाख साल पहले एक एस्ट्रॉयड आके टकराया और ये गड्ढा बना, और वैसे ही क्रेटर मार्स पे भी है, अर्ली मार्स पे। तो सोचो कि कितनी सारी चीजें मिलती हुई जुलती हैं, और ये दुनिया की बेस्ट साइट बता रहे हैं एंशिएंट चीजें स्टडी करने के लिए। तो मतलब आप अगर एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट भी बनना चाहो, मतलब आप जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान को कंबाइन करके आप अध्ययन करना चाहो पृथ्वी पे ही कि जीवन का कोई चिन्ह हो सकता है इस बाहर की क्रेटर के जरिए, तो आप यहीं पे जाकर स्टडी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। And so that's all I have to talk about. Astrobiology, what I like is it can be done by everybody. Every person with an interest, so many people with an interest in science can contribute to astrobiology, whether you're interested in astronomy, biology, physics, chemistry, optics.
all of the different areas of research and work done here are the sorts of things that go into studying about astrobiology and the sorts of things which go into skills that are used at NASA and at ISRO and at other space agencies around the world. तो देखो इन्होंने जो लिस्ट बना रखी है ना बच्चों, आपको दिख रही है कितनी सारी चीजें आप कर सकते हो एस्ट्रोबायोलॉजी में योगदान देने के लिए, जिसमें से केवल ये नहीं है कि आपको एस्ट्रोनॉमी करनी है, खगोल शास्त्र करना है, माइक्रोबायोलॉजी, भौतिकी, रसायन विज्ञान, ऑप्टिक्स मतलब भौतिकी का एक विश्लेषण वाला, ऑप्टिक्स कि प्रकाश कैसे ट्रेवल करता है, एनवायरमेंटल साइंस, इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, फिर और भी अलग चीजें योगदान, राइटिंग केवल लिखना सीखने से कि अलग अलग आर्टिकल्स लिख सकते हो, कोडिंग, कम्युनिकेशन, ग्राफिक डिजाइन, ये सब मिलके काम करते हैं ऐसे किसी प्रोजेक्ट, ठीक है? यस। And that's all I have, except for one more thing, which is I want to say that I always carry with me this 2,000 rupee note, and this is what I got when I lived in Bombay, and it makes me so happy to see the Mangalyaan, the Mars orbiter mission, which is such a fantastic mission, which ISRO conducted, and I wish ISRO continued success in exploring Mars and exploring the moon and exploring Venus and the other planets around in the solar system, and collaborating with other groups like NASA in doing so. So thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. देखो वो एक 2,000 रुपए का नोट दिखाया उन्होंने, वैसे है उनके पास। तो इन्हें अहमदाबाद में जब ये काम कर रहे थे, it was you received this in Ahmedabad, right? When I lived in Bombay. बॉम्बे, मुंबई में जब काम कर रहे थे तब इन्हें आने इसरो के और इधर उधर जो लोगों के साथ काम कर रहा था तब इन्होंने रखा था, और ये अपने साथ रखते हैं। इस तरीके से उनका एक प्रतीक बनता है अपने मन में कि एक चिन्ह है जो, मतलब देखो इन्होंने बोला कि पूरी कोलैबोरेटिव स्पिरिट है ना, नासा ऐसे थोड़ी केवल अमेरिकी, तो ये सारी स्पेस एजेंसी उसको भारत की हर जगह की वैल्यू करते हैं, और एक चिन्ह की तरह उसको वैल्यू करने की, उसको चेरिश करने के अपने पास। तो इस बात में तालियां होंगी। We feel very happy that you have that note. Okay. So, should we begin with the question answer round right away? Yes? Sure. Oh. All right. तो बताओ भाई, सवाल पूछो, हाथ खड़े करो, किसी से सवाल, जो भी सवाल, कम से कम 5 मिनट, कोई भी सवाल आ जाओ, आगे साफ आ जाओ, तुम भी पूछ सकते हो आराम से। यस, आदर्श जो स्पेसक्राफ्ट में था उसकी फोटो किसने ली? ये तो दूसरी। ओके, यू कैन आस्क दिस इन इंग्लिश, ट्राई राइट स्पेस फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट who took the photo? Who took the photo of the first spacecraft? You know? Of the first spacecraft, which I showed? Yes, in the presentation. The first one, I think it was... That was Voyager or Pioneer, and that was a drawing, not a photo, because they are so far out. The Voyager mission is hundreds of billions, more than 100 billion kilometers away. Not 100 billion. It's too far away to take a photo of it. So that's a drawing. जो पहली आपने देखी थी वो ड्राइंग, वो फोटो नहीं थी, याद है? फोटो और ड्राइंग में फर्क होता है। जैसे प्लूटो की तो जो थी ना फोटो ली है ना? Okay, he is not satisfied. Can you just open the slideshow once and just go back to sure. that? He says Sure. no, they look like a real photo.
So, Okay, hang on. just a second. और बच्चों और कुछ भी दिमाग में हाँ नहीं बच्चे कुछ भी पूछ ठीक है आराम से मैं खड़ा हूँ अगर आपको लगे कि Okay, which photo was it? This one? the next one कौन सी ये वाली आ गई या next yes This one. Okay, this is taken by astronauts on the space shuttle, because the space shuttle in 1994 or 1993, the astronauts in Space Shuttle Discovery released the Hubble Space Telescope in orbit around Earth, and they took this photo with a camera. this is oh so it was valid stubbornness on his part huh? All right so ये सुनो ये वाकई में फोटो ली हुई है ये एस्ट्रोनॉट ने ली थी जो बाहर निकले हुए थे स्पेस क्राफ्ट और उन्होंने हबल टेलीस्कोप की फोटो ली वेरी गुड आदर्श के लिए क्लब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आओ Okay. So he's asking about survivability or possibility of life on planets beyond Saturn. Pluto तक life हो सकती है या नहीं? Is it possible to have life there? It's possible, but we don't know. It's very cold. And we think that life does better in environments that are warm, because that's where you have more chemistry. And that's where you can make more complex, bigger life, is on places that are warm like the Earth, not cold like Pluto. Because all of chemistry, every chemical reaction, goes faster when it's warm than when it's cold. Excellent answer. So देखो जैसे हम सब अणु से बने होते हैं ना और कोई भी गर्मी है ना वो साधक होती है वो मतलब वो साधक शब्द गलत शब्द है वो साथ देती है अगर कोई रिएक्शन हो तो जीवन बनने के लिए भी कोई रिएक्शन होता है कार्बन कहीं से मिलेगा तो सर्दी में उसकी संभावना बहुत कम है जैसे प्लूटो या दूर वाले प्लैनेट में जहाँ गर्मी है ही वहां संभावना कम है जी हमें पता नहीं है लेकिन अगर हमें देखना है तो गर्म ग्रह पे ज्यादा देखना साइंस बनता है ज्यादा दिन ठंडे में ग्रेट थैंक यू अगला सवाल I'll just give them a time limit overall because then once they keep on coming, it will just keep on coming. So, shall we put that cap at like 10 minutes? Sure. That's really oh, English translation. So, if the rings of Saturn are destroyed, what effect will that have on Saturn? Interesting question. So, yes. So the rings of Saturn are probably will be destroyed, and they will slowly fall into Saturn, and they will heat up Saturn a little bit, and then they get burned up in Saturn's atmosphere. If you come back in 1 billion years, Saturn will probably have no rings. Maybe instead, Jupiter will have big rings, and Saturn no rings if you come back in 1 billion years. इन्होंने बोला कि अगर सैटर्न की चूड़ियां नष्ट हो गई वो धीरे करके उसमें जो भी पत्थर बर्फ बर्फीले धीरे करके सैटर्न में ही घुस जाएंगे उसकी गुरुत्वाकर्षण से और जल जाएंगे थोड़ा सा सैटर्न को गर्म करेंगे ठीक है और वैसे भी सैटर्न में 1 बिलियन साल बाद यानी कि 100 करोड़ साल बाद देखेंगे तो नींद नहीं होगी केवल एक गोल होगी लेकिन बृहस्पति की बहुत बड़ी चूड़ियां बदलता रहता है ऐसा होता है गुड क्वेश्चन Yes, next. Very good question. If you're sending Titan, dragons fly on Titan, but in such extreme cold as you described, -200, how will it survive? Because this is in reference to many spacecraft which failed during
the nights on moon, right? So कैसे survive करें? How what technology are you using? Good question. So we have to have heaters on the spacecraft to keep it warm. We have heaters which are powered by plutonium, and the heaters keep it warm and keep it from freezing. And we think that it will last on Titan for maybe a couple of years. तो हमारे पास हीटर होंगे, उसके अंदर प्लूटोनियम से चलने वाले. हमारे यहाँ पे कोयले की जैसे प्लूटोनियम से चलने वाले रेडियोएक्टिव होता है, उससे चलने वाले हीटर होंगे और वो उन्हें लगता है कि कई सालों तक उसको गर्म रखेगा. ठीक है, तो ठंड से उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा. गुड क्वेश्चन, एक्सीलेंट. एनी अदर क्वेश्चन? नेक्स्ट. यस, come. Don't hesitate. Even the girls. Most well. Usually we just telescope get CCTV. So he's saying that the James Webb Telescope has mirrors of goldenish appearance. Why? Yes. So James Webb Space Telescope has mirrors that look like gold, and that's because they are in the infrared. You want a mirror which doesn't look silver but looks gold, because that is how you reflect infrared light. And so it's a different color, it's a different wavelength, and you use different things to make the mirror like this. तो जैसे कि प्रकाश के भी अलग-अलग वेवलेंथ होते हैं, पता है ना, जितनी को लोगों को पता है. तो जो दिखता है वो वाला प्रकाश नहीं है, इंफ्रारेड वाला प्रकाश है. ठीक है, तो इंफ्रारेड वाला प्रकाश को देखने के लिए सबसे अच्छी चीज है गोल्ड. ठीक है, और गोल्ड उसके ऊपर लगा रखा है, परत लगा रखी है, इससे वो निकलता है. वेरी गुड. आजा. यस, 5 minutes left. 5 मिनट में. Oh, what is the diameter of Pluto? Pluto का व्यास कितना है? Yeah. The diameter of Pluto is about it's about the size of the moon. It's about 2,400 kilometers. So it's actually smaller than the northern tip of India to the southern tip of India. Okay. It's the Okay. तो बच्चों, प्लूटो का व्यास इतना छोटा है कि हमारा पूरा भारत कश्मीर से कन्याकुमारी जाते हैं ना, तो लगभग 3000 किलोमीटर बनता है. प्लूटो का 2400 किलोमीटर है, इससे भी छोटा है पूरा व्यास. ठीक है, नाइस, ग्रेट. बहुत एक्सीलेंट. Wow, excellent question. So I thought what kind of a question he's asking, but now I realize he's saying as the Earth is rotating, and so do all the planets, why doesn't the water actually lag behind or fall from the effect of rotation? Water bodies, a large water. So yeah. But So the Earth, it's a good question. The water on the Earth actually does lag behind a little bit, and that's what causes the tides. The tides is when the ocean goes up and down and up and down, and that's because the water is not rotating exactly the same as the Earth's rocks are rotating, and that causes the ocean to go up and down in the tides. तो ये होता है जो आप बोल रहे हो, होता है. देखो उत्तम का सवाल कितना अच्छा है. ये बोल रहा है कि अगर पृथ्वी गोल गोल घूमे तो उसका पानी नीचे क्यों नहीं गिरता, उछलता नहीं है, पीछे क्यों नहीं रहता? ये बोल रहे नहीं रहता है, तभी हमारी इतनी सारी समुद्र में लहरें बनती हैं. जैसे चांद के गुरुत्वाकर्षण से भी चक्र होता है, मून की ग्रेविटी से भी होता है, और पृथ्वी के रोटेशन से भी लहरें कई बार पीछे रहती है. पानी का मतलब प्रभाव दिखता है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि वो नीचे ही रह जाता है, किसी चिपका हो रहा है. बहुत अच्छा सवाल. नेक्स्ट 2-3 मिनट्स और. हाँ, पर आपने पूछ लिया तो आप पूछ लो सवाल.
यानी अगर नए बच्चों में मानसिक के अलावा कोई भी सवाल पूछ सकते हो, मौका छूटेगा। आसपास आ गए, पास में okay, so she's asking about the possibility of collision between planets because they get attracted towards each other and the larger planets are attracting the smaller planets. Can this happen? And if this happens, what will happen? Yeah, good question. Huh. So in the past, we had lots and lots more planets in the solar system, and sometimes they did collide. For instance, an ancient planet almost the size of Mars hit the Earth, and that's what caused the moon to be formed. But now that we only have, these 9 planets in the solar system, they're on pretty stable orbits. So it's very rare that they would actually collide with between 2 planets anymore. But in the past, it happened a lot. बहुत अच्छा सवाल है। तो ये पूछ रही है कि जब सौरमंडल में 2 ग्रह आपस में टकरा जाएं या साथ में मिल जाएं, क्या हो सकता है और ऐसा होता है नहीं? बोले पहले बहुत सारे ग्रह थे, हमारे जो भी ग्रह है ना 8 ग्रह उससे भी ज्यादा, तो वो आपस में टकराते भी थे। जैसे कि थिया नाम का एक प्लैनेट था, was Thea, right? Was Thea which collided with Earth. Thea, right? And one more thing. Also, every time you see a shooting star is basically a really tiny planet hitting the Earth. A really tiny planet that's just maybe 1 millimeter or 2 millimeters across hitting the Earth and burning up. And that's what happens. So आप लोगों ने टूटते तारे देखे? तो टूटते तारे भी आप टूटते तारे को भी बहुत छोटा ग्रह की तरह मान सकते हो। तो ऐसा होता है, आपस में भिड़ते हैं, वो आते हैं कुछ या तो पृथ्वी के वायुमंडल में चल जाते हैं या टकराते हैं। तो ऐसा अभी भी होता है कि छोटे छोटे बच्चे तो उसका उतना प्रभाव नहीं होता, लेकिन बड़े ग्रह भी आपस में टकरा देते हैं। और थिया था जिसने पृथ्वी पर टकराया तो इतना पत्थर चट्टान निकला बाहर, उससे चांद भी बन गए आसपास पत्थर चट्टान निकल के। Okay, so now we take the last question. Okay. Okay, second last. Fine. Second last, right? Okay. The hottest planet. He's asking the name of the hottest planet. Venus. Venus is the hottest planet. Now, it's not the closest to the Earth. I mean, it's not the closest to the sun. Mercury is closer to the sun. But Venus has a thick atmosphere, and the atmosphere actually traps the heat inside. So that's why Venus is more hot than Mercury. Venus, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? शुक्र। वेरी गुड। शुक्र सबसे गर्म प्लैनेट है, वो सबसे ज्यादा पास में सूरज के, लेकिन उसका वायुमंडल ऐसा है कि वो सारी गर्मी को अपने अंदर रह लेता है। ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? मोस्टली और What's that? It's CO2 or methane? A lot of it is carbon dioxide. Yeah. तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, हम ग्लोबल वार्मिंग होते हैं ना अभी, तो इसीलिए वो ग्लोबल वार्मिंग एकदम सबसे खराब चरण पे पहुंच चुका है। Okay. We have lot of hands up. I'll just take the questions one from them together and I'll ask you collectively. All right? And then we close the session. फटाक से मेरे को बता दो अपने अपने सवाल। इधर आ जाओ। सब आ जाओ। सब नहीं, मतलब जिनको सवाल करें। सबसे चीज कौन सी है? अच्छा, और बहुत जल्दी बस ड्रॉ कॉल ही लेना, क्योंकि मैं याद नहीं रखूंगा बेस का।
Okay, we have basically 3 questions. I'll ask them all of them together. All right. Because they also have to go home. It's getting late. You are also in Indian Standard Time. Yes. Oh, great. So the first thing is excellent question. You said that there is an increasing possibility of life when things warm up. So if the rings of Saturn will come to Saturn, collide, will that increase the possibility of life if it gets warmed up? Number one. Second question is, which is the coldest spot we have ever recorded in the solar system? Not the planet, the spot. All right, and on which planet? And what was the last question? And which is the largest ever telescope made in space or on the Earth ever? So these are the 3 questions. Okay. Okay. Number 1, the rings of Saturn. If they heat up, they will heat up a little bit as they crash into Saturn, but only for a couple of seconds. So to make life, what you want to do is you want to have warm chemistry for a long time, like not for just 1 or 2 seconds, but for billions of years. And that's why we think a place like Europa, where it's had warm water for billions of years, is maybe the best to look for life. Next question about the coldest point on anywhere. So the coldest moon is probably Triton that we know about, but you know the further you go out. What was the name? Coldest moon? Triton, which is a moon of Neptune. Right, but the coldest point anywhere in the solar system that we know of is in a lab at the University of Colorado in Boulder, Colorado. And that's where they have made something called the Bose-Einstein condensate. And so that's the Bose, like, he was a scientist from West Bengal. And this is the lowest and coldest state of matter. And it was at about maybe, I don't know exactly, but about 0.01 kelvins, something like that. So that's the coldest which we have ever seen. And that's in the laboratory at the University of Colorado. So that's the coldest point. Number 3, the largest telescope ever. There is a telescope which is under construction right now. It is called the, I believe it's called the ELT, the Extremely Large Telescope. And it's being constructed by Europe in Chile. And it is, I believe it's 30 meters across. It's between 20 and 30 meters across. And so it is more than double the diameter of the James Webb Space Telescope. Now, it doesn't do the same thing as the James Webb Space Telescope, so it's not better just because it's bigger, but it is a huge and revolutionary telescope. I see. तो तीनों सवालों के जवाब देता हूं मैं अब, है ना? ये आखिरी सवाल थे, इसके जवाब सुन लो आराम से. देखो, सबसे बड़ा जो टेलीस्कोप है वो मैं सबसे पहले टेलीस्कोप बता रहा हूँ. वो अभी बन रहा है चिली में. चिली साउथ अमेरिका में है और वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी बेसिकली यूरोपियन स्पेस एजेंसी बना रही है वो वाला टेलीस्कोप. और वो 30 मीटर का डायमीटर का होगा. कितना? यानी कि जेम्स वेब टेलीस्कोप से डबल से भी ज्यादा. ठीक है. और फिर दूसरा जो आपका बीच वाला सवाल था, सबसे कोल्डेस्ट स्पॉट, वो हमें अगर सौरमंडल में मिला हो वो ट्राइटन पे मिला है. नेपट्यून का एक चांद है. ठीक है. नेपट्यून एक सबसे दूर वाला ग्रह है, उसका एक चांद है. What was the temperature at Triton? You know? Oh, Triton may be 20 kelvins. Okay. So minus 253 degrees Celsius. Okay. यानी कि एब्सोल्यूट जीरो से बस 20 डिग्री ऊपर. ठीक है. और उससे भी ठंडा लेकिन हमारी पृथ्वी पे लैब में है. कोलोराडो में एक लैब है जहां पे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है. बोस एक भारतीय वैज्ञानिक थे, उनके ऑनर में रखा हुआ है. आइंस्टाइन को सब जानते हैं. वो 0.1 केल्विन पे, मतलब एक सबसे ठंडा जो न्यूनतम तापमान पॉसिबल है वो 0 डिग्री केल्विन है. उसके नीचे पे क्या है, अणु हिलने बंद हो जाते हैं. तो
सिर्फ 0.1 डिग्री थोड़ा सा ऊपर वहां पे हमारी पृथ्वी पे ही है, तो सबसे ठंडा स्पॉट है। और जो बीच का सवाल था, जो सैटर्न वाला था, कि अगर सैटर्न पे अगर कुछ चीजें गिर जाती हैं, आपने पूछा, तो वो गर्म होगा, लेकिन कुछ सेकंड के लिए, चंद सेकंड के लिए। वो गर्मी जो बरकरार रहे, तभी जीवन की संभावना बढ़ती है। ठीक है, यहाँ पे तो सब गर्मी और उमस से बेहाल हो रहे हैं, है ना? So it's actually extra humid here. The heat index is very high. So they don't want to hear about warmth, more about cold. I mean, it's 34 or 35, but with a humidity of 75, I guess. Oh. So yeah, so it feels like 44 or 45. It's about to rain, but till it does, we are almost screwed. So you can see I am in sweat. You know, I the see science. So thank you बच्चों for great question. बहुत अच्छे सवाल पूछे आपने. Before we close the session, okay, they loved it. They loved it. Before we close the session, हम सब एक बार इनको न्योता दें यहाँ आने का. So I asked them whether we should invite you here. Try again. That was a big yes. They all want you to come here, and we want you to come here. I personally would love for you to come here. You provide so valuable time, insights in such a way that they all can relate to. It means a lot for us. It means a lot for Vatsalya family. And I'm so happy Pamela ji could connect us last year. And you know, this single session acts like a, you know, oxygen in the rocket thrusters if the session is a mission. So it doesn't start sometimes without you. So this is the second class for the new batch. That is why it's truly all inspiring. And we really want you to come here now. It's been a long journey. We are still here next year continuing this program, but you are now a family and you have to come here. All right, it's not too far. Okay, you will have the best hospitality of India, you know. Well, thank you, Kartikeet. It's such a pleasure to talk with you and the amazing things you've done at the school, and talk with all of the students and all of the kids, and you know, see what you and the staff and everyone has done there. So thank you so much. It's really a pleasure, and it's so inspiring. So thank you. Thank you so much. Last but not the least, I would like to introduce you to one person. Just come here once. So in the process of, you know, last 7-8 months, come here, don't be shy. This guy Devashish, he has become my right hand man in managing all the astronomy sessions. He has taken wonderful photos, including those of the pillars of creation, which you showed. So we have taken our own versions of those. I'll send you those over email. And he's now, you know, begun teaching and everything. He's taking a lot of interest in it. He's gone to various places to learn more about astronomy. Now he has a very powerful system, which I used to use last year. We are talking on that. And he's making use of that, taking amazing photographs and analyzing them. He knows softwares. He's doing well. He's Devashish. His name is Devashish. Maybe next session, he'll be taking some lead. All right, he's directly doing it. So Devashish, I've introduced you directly to Henry sir. Be ready to go to him directly now. Okay. Pleasure. Thank you. All right. Thank you so much, Henry sir. Such a pleasure. Such an honor. All right. Thank you so much. Thank you, Kartikeet. Thank you, everyone. Bye-bye. चलो, उन्होंने बाय बाय बोल दिया. ठीक है.